Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, dear students. Today the topic under discussion is respiration. Second year biology, first chapter, that is respiration. So, respiration is basically the oxidation of food to release energy. Energy is vital to carry out the daily activities. So, we have two types of respiration, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. In aerobic respiration, oxygen is necessary, that glucose is being oxidized by 6 oxygen molecules. So at the end we get 38 ATPs. 2 ATPs are utilized, so the net gain we have 36 ATPs left, 6 water molecule and 6 carbon dioxide molecules. The anaerobic respiration, that is in the absence of oxygen, that gives us 2 ATPs and 2 lactic acids. So the ATPs, adenosine triphosphate, is a rich energy molecule, and energy is vital to carry the various daily activities. Now, gaseous exchange surface area, we have two surface areas, that gills and lungs. Gills concerned with aquatic mode of life and lungs concerned with terrestrial and aerial mode of life. Gaseous exchange surface area can be defined an area where exchange of respiratory gases occurs with environment. You know, the respiratory gases are carbon dioxide and oxygen. Now, the characters of gaseous exchange surface area are: it must be permeable, it must have thin diameter. The diameter may be 1 millimeter or even less than 1 millimeter. Number third character, it must have large surface area. Large surface area, the human area, about 70 to 90 meter square area, that is 1 tennis court area. 1 tennis court area. Number fourth character, it must have good blood supply. It must have swift ventilation rate. Ventilation is a medical term we call in English simple word, that is breath rate. So the gaseous exchange surface area must have these 5 characters in order to exchange the gases through its surface area. Now, human respiratory system provides the fundamental ability to breathe. It is made by 8 organs, that is nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchiole, alveoli and lungs. Nose is the external visible part of respiratory system. It is made by 3 parts, that is bone, cartilage and fibrofatty tissue. Bone in nose are nasal bone and ethmoid bone. Ethmoid is one of 8 skull bone. Ethmoid bone make the eye orbits and the base of nasal bone. Cartilage that is present in nose is hyaline cartilage, and the fibrofatty tissue, that is the collapsible tip of nose. Shape of nose depend by ethmoid bone and cartilage bone. Now, what the function of nose? The function of nose, that is filtration of air. Air is being filtered through nasal hairs and mucus. Second function of nose is moisturizing of air. Third, warming of air at 30 degrees Celsius. Nose internally lined by mucous membrane. The mucous membrane secrete mucin. When reacted with water, this make mucus. Mucus keep the organ moist, and it is antiseptic in nature. The second part that we call throat, pharynx. Pharynx is the first dual organ. It is cone shaped. It is a dual organ between digestive system and respiratory system.
In digestive system, it swallows the food or bolus, and in respiratory system, it acts to rush the air to epiglottis. Third part, that is larynx. Larynx is made by cartilaginous plates. It has 4 local names. We call it voice box, sound box, chatter box, or Adam apples. It has 4 parts, that is epiglottis, supraglottis, glottis, and subglottis. Larynx is known as the second dual organ. Dual means it performs 2 functions. Number first, it produces the sound, and second, it rushes the air to trachea. 2 vocal cords are present between supraglottis and glottis. Vocal cords are basically stretched mucous membrane. In male, vocal cords are large in size, while the pitch of sound is low. In case of female, the size of the vocal cord is small, but the pitch of sound is high. Okay, the fourth part of the respiratory system, that is trachea. Trachea is known as windpipe. It is 10 to 12 centimeter long, a hollow pipe, 2 centimeter wide. It have 16 to 20 C-shaped cartilaginous rings. Trachea is lined by ciliated mucous membrane. C-shaped cartilaginous rings are non-collapsible, thus it prevents suffocation. Air is again filtered, warm and moist in the trachea. The fifth part of the respiratory system, that is bronchi. Bronchi is the first bifurcate part of trachea. Trachea divide in 2 branches, right bronchus and left bronchus. The right bronchus is short but dilated, while the left bronchus is elongate but narrow. The left bronchus is elongate due to it has to provide space for the beating heart. That's why it is elongate. Structure of bronchi is similar to trachea, but cartilaginous plates are present at the distal ends of bronchus. Number 6 part, that is bronchioles. Bronchioles present at the end of bronchi and terminated at alveoli. Bronchioles lined by ciliated cuboidal epithelial cells and smooth muscles. No cartilage is present in bronchioles. Air is equally distributed in whole lung due to the smooth muscle contraction and relaxation ability. Number 7 part of the human respiratory system, that is alveoli. Alveoli make the gaseous exchange surface area. Wall of alveoli is 0.1 micrometer diameter. Alveolar wall is lined by moist squamous epithelium, collagen and elastin fibers. Total number of alveoli in adult both lungs are 700 millions. Now we have 2 types of alveolar cells. 97% of alveolar cells are type 1 cells and 3% cells are type 2. Type 1 cells concern to gaseous exchange, respiratory gaseous exchange, and type 2 cell concern to surfactant production. Surfactant, this concern to the lung clearance mechanism. It reduces the surface tension, which increase the solubility. Thus inside the lung, any dust particles, it get mixed in mucus to form the sputum, and when we
excrete out the sputum, the lung get a sort of clearance mechanism. Number 8, we have lungs. Lungs, to a number, it is present inside the thoracic cavity. It is red, pinkish, spongy organs. It is balloon shape. We have 2 lungs in the thoracic cavity, right lung and left lung. Right lung, it has about 392 million alveoli. It represents 56% by volume. It has 3 lobes, anterior lobe, medial lobe and posterior lobe. It have 2 oblique fissure. What is fissure? It is superficial cord which prevent overfilling of lung by air. Left lung have about 308 million alveoli. It represent 44% by volume. It have 2 lobes, anterior lobe and posterior lobe, and it has just 1 oblique fissure. Okay, Bismillah. The human respiratory system is a diagram, that is external visible part, that is nose, that we have pharynx, that we have larynx, the larynx being composed of 4 parts, that is epiglottis, supraglottis, glottis and subglottis. That is 2 vocal cords present. Now that is trachea. The trachea, as we call windpipe, that we call windpipe. It is 10 to 12 centimeter in length and 2 centimeter in width. It have about 16 to 20 C-shaped cartilaginous rings, and it is lined by mucous membrane that have cilia. Now the first bifurcate part, bifurcation means 2 branch, that we call bronchi, that we call left bronchi, that is called right bronchi. The right bronchi is short and dilate, while the left bronchi is elongate and narrow because it has to provide space to the beating heart. That's why it is elongated. Now that we have bronchioles, the bronchioles we have primary bronchiole, secondary bronchiole and tertiary bronchioles. The bronchiole terminated by alveoli, air sacs, alveoli. The right lung is about 56% by volume and it have 3 lobes, while the left lung it have 2 lobes and about 44% by volume. The lung we discuss here, lungs are covered by pleural membrane. It is bifold membrane. Bifold mean 2 foldings are there. Outer pleural membrane is known as parietal pleural membrane, while inner pleural membrane is known as visceral pleural membrane. So that is the visceral part. Visceral pleural membrane direct touches the surface of the lung, while the parietal pleural membrane, this touches the chest wall. So between the 2 pleural membrane there is a fluid we call pleural fluid, that we call pleural fluid. Pleural fluid, between lung and the pleural membrane there present a liquid known as pleural fluid. The function of pleural fluids are, this act as a coolant because lung contract and relax. So as a physical phenomenon, any where there present contraction relaxation, obviously heat generation is there, so this act as a coolant to reduce the friction force. Second function, stop air leakage from lungs. So if you see, that is the pleural fluid between the lung and the pleural membrane. This is diaphragm. The lung rests over the diaphragm,
So the base of the lung is actually resides over the diaphragm. Diaphragm is a sheet of skeletal muscle which separate digestive system from the respiratory system. Lung volumes and capacity. Spirometer, a medical device by which we calculate the air volume inside the lung. In average adult man, lung capacity is about 5 liters or 5,000 ml water. We have two volumes, one we call tidal volume and the second we call residual volume. The volume of air during quiet breath. Quiet breath means the body is in a state of rest condition. That is rest condition. So tidal volume in rest condition, the volume of air that is either inhale or exhale, its volume will be 0.5 liter. So this is tidal volume. Residual volume concerned to exercise. When the body is in the exercise mood, the volume of air remain inside the lung after forceful expiration, that is 1.5 liters or 1500 ml air, that we call residual volume. Control of breathing. Breathing is basically involuntary action. The control center lies in medulla oblongata of brain, and this center is known as breath center. Breath center, ventral side of breath center control inspiration, so it is known as inspiratory center. The dorsal and lateral sides of breath center control expiration, it is known as expiratory center. Now breathing is controlled by muscle and nerves. We have two muscles and two nerves. Intercostal muscle, a muscle that is present in between the ribs, and diaphragm, a sheet of skeletal muscle that separates the digestive system from respiratory system. So intercostal muscle and diaphragm, these are two muscles. The nerves, intercostal nerves control the intercostal muscle, while phrenic nerve control the diaphragm. Breathing is basically the suction of air and pump out of air mechanism. Breath cycle has two parts. One, inhalation oblique inspiration of air, and exhalation or expiration of air. Basically, suction is the phenomenon that we know as inhalation, and pump out of air, that is exhalation. Now inhalation, it is an active process, energy is required. Ribs move upward and forward. The intercostal muscles contracts. The distance between the spine and the sternum increase. Spine, a medical term that is used for vertebral column, and sternum, that is your chest bone. So the distance between spine and sternum increased. Diaphragm moved downward. Pressure of air in lungs decreased. Air rushes from external environment into lungs via nose. Thus inhalation or suction of air occurs. Now exhalation, it is a passive process, no energy is required. Ribs move downward and inward. Intercostal muscle relaxed. Distance between spine, or we see vertebral column, increase, and sternum decrease. The diaphragm move upward, dome shape. Pressure of air in lung increase. Air rushes from lungs to external environment. Thus exhalation or pump out of air occurs. Now voluntary control of breathing.
A's breathing is basically involuntary action, but it can be controlled voluntary up to some limit. Nerve impulse would be generated at cerebral hemisphere of brain. The example of voluntary breathing, that is coughing, yawning, sneezing, singing, recitations of holy books, etc. Now, transport of oxygen by blood. By hemoglobin, 97% oxygen is transported, and in dissolved plasma it is 3%. Number first, oxygen transport by hemoglobin. A hemoglobin reacts with 4 oxygen molecules in the presence of carbonic anhydrase enzyme that is produced by the cell membrane of RBC, and this make oxyhemoglobin Hb4O2. The ability of hemoglobin to bind with oxygen, this we call oxygen carrying capacity. The maximum oxygen carrying capacity is 20 ml oxygen would be dissolved in 100 ml of arterial blood when partial pressure is 100 mm of mercury and saturation that is 100%. How to calculate the maximum oxygen carrying capacity? इसका आंसर है हैफनर वैल्यू. हैफनर वैल्यू हमारे पास है 1.34 ml oxygen. We know that 1 gram of hemoglobin can dissolve how much oxygen? That is 1.34 ml oxygen. In 100 ml of arterial blood, there present 15 gram of hemoglobin. So oxygen dissolved by 100 ml arterial blood would be 15 multiply 1.34. हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 20.1. अब हम इस वैल्यू को राउंड अप करते हैं तो 20 ml oxygen will be dissolved in 100 ml of blood. So हमारे पास जो ऑक्सीजन मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितना है कि 20 ml ऑक्सीजन will be dissolved in 100 ml of arterial blood. ये हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है. अब इसके लिए जो पैरामीटर है, पैरामीटर partial pressure would be 100 mm of mercury and saturation that is 100%. अब हमारे बॉडी में 2 कंडीशंस पाए जाते हैं, एक है रेस्ट कंडीशन और दूसरा है एक्सरसाइज कंडीशन. नाउ इन रेस्ट कंडीशन 100 ml arterial blood has dissolved oxygen कितना है 19.4 ml. अब इसके पैरामीटर क्या है? partial pressure 95 millimeter of mercury और saturation that is 97%. इसी तरह 100 ml venous blood has dissolved oxygen. अब venous blood में कितना होगा 14.4 ml. अब इसके पैरामीटर कितने हैं? partial pressure इसका 40 mm of mercury और saturation that is 75%. अब ऑक्सीजन कंजम्पशन इन टिश्यूज लेवल. अब टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन कितना कंजम हो रहा है? दैट इज 100 ml arterial blood will move to the tissues और फिर टिश्यू से 100 ml venous blood बाहर निकलेगा. अब वैल्यूज पुट करें. 100 ml arterial blood की वैल्यू, ऑक्सीजन की वैल्यू है 19.4 ml और वीनस पे है 14.4. आप इसको माइनस करें तो 19.4 से 14.4 जब माइनस हुआ तो आपके साथ आंसर आया 5 ml ऑक्सीजन दैट विल बी यूटिलाइज्ड at the tissue during the rest condition. It will be carried by 100 ml of blood. अब आपके जिस्म का जो दूसरा कंडीशन है दैट इज एक्सरसाइज कंडीशन. अब एक्सरसाइज कंडीशन पे क्या है? 100 ml arterial blood has dissolved oxygen वही 19.4 और ये इसके पैरामीटर है. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये 95 mm ऑफ मर्क्यूरी होगा और सेचुरेशन दैट इज 97%. अब 100 ml venous blood has dissolved oxygen कितना है 4.4 ml. अब इसका पैरामीटर क्या है?
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और सेचुरेशन दैट इज 20%। अब हमने ऑक्सीजन का कंजम्पशन इस्तेमाल के हमारे साथ जो एक्टिव टिश्यू है यहाँ पे कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ। सो वैल्यू वही है 100 ml आर्टीरियल ब्लड, ये कहाँ पे जाएगा, एक्टिव टिश्यू पे जाएगा और एक्टिव टिश्यू पे अपना ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा और फिर वही 100 ml वीनस ब्लड टिश्यू से बाहर जाएगा। अब वैल्यूज पुट करें, 100 ml आर्टीरियल ब्लड की वैल्यू है 19.4 ml और वीनस की है 4.4 ml। अब आप इसकी वैल्यूज़ को लिखें और एक्टिव टिश्यू पे इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 19.4 से 4.4 जब माइनस हुआ तो आपके साथ आंसर आया 15 ml ऑक्सीजन। दिस विल बी यूटिलाइज इन कौन सा टिश्यू है, यहाँ पे देखिए एक्टिव टिश्यू। अब ये चूंकि एक्सरसाइज है तो ये टिश्यू जो है ये एक्टिव है। अब हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि ऑक्सीजन कंजम्पशन एट एक्सरसाइज कंडीशन इंक्रीजेस 3 times। कैसे 3 times? नॉर्मल हमारे पास 5 है रेस्ट कंडीशन पे और एक्सरसाइज पे 15 है। सो 5 into 3 दैट इज 15। सो हमारे पास जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन है वो 3 गुना 3 times इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड प्लाज्मा। अब ब्लड प्लाज्मा जिस मैंने आपको शुरू बताया कि ये रिप्रेजेंट करता है 3%। 100 ml आर्टीरियल ब्लड प्लाज्मा, इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन कितना है 0.29 ml ऑक्सीजन है और पार्शियल प्रेशर कितना होगा 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब यहाँ पे बुक ने आपको एक ट्विस्ट दिया है। ट्विस्ट उस पॉइंट को कहते हैं जो आसानी से समझ में ना आए, थोड़ा सा उलझन उसके अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल अब आपको ये ट्विस्ट दिया गया है, इफ पार्शियल प्रेशर of oxygen is increased to 100 mm of mercury then फिर क्या होगा। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास 95 है और ट्विस्ट के अंदर यहाँ हमें 100 दिया गया है। अब 100 पे क्या होगा, 100 ml आर्टीरियल ब्लड प्लाज्मा हैज डिसॉल्व ऑक्सीजन। अब डिसॉल्व ऑक्सीजन कितना है 0.3। अब आप यहाँ पे देखिए 95 पे है 0.29 और 100 पे है 0.3। अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, व्हाट इज द राइज वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हाट इज द राइज वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन। आपसे ये पूछा जाता है कि जब आप ट्विस्ट के अंदर इंक्रीज करें 100 प्रेशर तो फिर आपके साथ इजाफा कितना आता है पार्शियल प्रेशर पे। तो जाहिर सी बात है हमारे पास इंक्रीज कितना हुआ है 100। सो 100 mm Hg से आप माइनस करेंगे 95 तो आपके साथ आंसर आएगा 5 mm ऑफ मर्करी। ये है आपका पार्शियल प्रेशर में इंक्रीज। और दूसरा है कि ऑक्सीजन में कितना इंक्रीज आया, तो ऑक्सीजन में कितना है देखिए 100 पे कितना है 0.3 और 95 पे कितना है 0.29। सो 0.3 से आप माइनस करें 0.29 तो आंसर आता है 0.01 ml ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के अंदर क्या है, ये ऑक्सीजन के अंदर इजाफा है। सो हम ये कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम जब 95 से 100 पे आया तो हमारे पास ऑक्सीजन में जो इजाफा है वो 0.1 ml है और पार्शियल प्रेशर में इजाफा है 5 mm। अब ये नॉर्मल एक्टिविटी की तरह हम वापस आते हैं। 100 ml वीनस ब्लड प्लाज्मा में कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व है, दैट इज 1.12 ml और पार्शियल प्रेशर कितना है 40 mm ऑफ Hg। अब ऑक्सीजन कंजम्पशन एट टिश्यू लेवल कि कितना ऑक्सीजन अब यूटिलाइज हुआ टिश्यू में। सो वही चीज़ है कि 100 ml आर्टीरियल ब्लड प्लाज्मा किसकी तरफ आती है, टिश्यू में, और टिश्यू में अब ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा और फिर यही ब्लड टिश्यू से वीनस ब्लड प्लाज्मा की शक्ल पे निकलेगा। अब वैल्यूज पुट करें, 100 ml आर्टीरियल की वैल्यू है 0.29 और 100 ml वीनस ब्लड प्लाज्मा की वैल्यू है 0.12। सो अब यहाँ पे जो टिश्यू के अंदर कंजम्पशन है
यूटिलाइजेशन है 0.29 से आप माइनस करें 0.12 तो आंसर आपका आता है 0.17 ml ऑक्सीजन would be carried by 100 ml of blood plasma और 0.17 रिप्रेजेंट करता है 3%। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय 3 मेथड्स। हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीकों से बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वहाँ से 3 मेथड्स पे निकल आता है टूवर्ड्स द लंग्स। नंबर फर्स्ट एज बाइकार्बोनेट आयनिक फॉर्म, ये 70% है। एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म, ये 23% है। एंड एज डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, दैट इज 7%। सबसे पहले हम एज बाइकार्बोनेट आयनिक फॉर्म डिस्कस करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूसेस इन अ सेल। अब देखिए ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस, ये आपके सेल का पावर हाउस है। सो यहाँ पे आपका एनर्जी जनरेट होता है। सो फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया और आपके साथ एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज द कॉमन मेटाबोलाइट्स दैट प्रोड्यूसेस इन अ सेल। सो हमारे साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमारे पास क्या बन जाता है, वीक एंड अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये अनस्टेबल है, ये फौरन डिसएसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है हाइड्रोजन आयन पे और बाइकार्बोनेट आयन पे। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन हकीकत में ये प्रोटॉन है, एसिड है, और बाइकार्बोनेट हकीकत में ये बेस है। अब हमारा जो pH है ब्लड का दैट इज 7.4। अब ये सवाल है कि अब अगर खून के अंदर हाइड्रोजन आयन ऐड होता गया तो हमारे पास चांस किसका है, हमारे पास ख़तरा है कि हमारा ब्लड एसिडिक हो जाए, और अगर बेस ऐड होता जाता है तो हमारे पास ख़तरा है कि हमारा ब्लड बेसिक हो जाए। अब हमें खून ना एसिडिक चाहिए ना बेसिक चाहिए, हमें हर हाल में pH को 7.4 पे मेंटेन करना है। लिहाजा हमारे पास ब्लड के अंदर बफर मॉलिक्यूल है। व्हाट इज बफर? अ मॉलिक्यूल विच स्टेबलाइज द pH। और हमारे पास जो बफर मॉलिक्यूल है दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन इस हाइड्रोजन को रिएक्ट करता है और हमारे पास बन जाता है हीमोग्लोबिनिक एसिड HHB एंड 4 ऑक्सीजन इज रिलीज टू सेल। ये 4 ऑक्सीजन रिलीज हो जाते हैं, सेल की तरफ आ जाते हैं और इस तरह हमारे साथ एसिडिटी का खतरा टल जाता है। अब मसला रह जाता है कि बेस बाइकार्बोनेट, अब इसका तोड़ क्या है? बाइकार्बोनेट का जो तोड़ है उसको हम हैम्बर्गर फिनोमेनन या क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। ये कैसा है? ये मैंने ड्रॉ किया है आपकी बॉडी के अंदर, ये एक सेल है। ये सेल इट इज लाइन बाय कैपिलरी वॉल। ये हर सेल के ऊपर कैपिलरी वॉल होता है और उस कैपिलरी वॉल के अंदर ये ल्यूमन है, खाली जगह है, और यहाँ पे थिन फिल्म ऑफ आरबीसी इज मूविंग। आरबीसी एक कतार के अंदर इस ल्यूमन के अंदर फ्लोट करते हैं। अब आप देखिए सेल के अंदर जब फूड ऑक्सीडाइज हुआ तो हमारे साथ एटीपी जनरेट हुआ, वो एटीपी मुख्तलिफ फंक्शन के लिए यूटिलाइज हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कॉमन मेटाबोलाइट है। ये डिफ्यूजन से सेल के अंदर जब इसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ये ब्लड कैपिलरी वॉल की टिश्यू पे आए और इस तरीके से प्लाज्मा पे बाहर निकल आए। अब प्लाज्मा पे जब निकल आए तो प्लाज्मा बज़ात खुद 95 से 97% वाटर है। प्लाज्मा बज़ात खुद 95 से 97% वाटर होता है। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर में भीग जाता है। आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स है। सो ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलिस्ट फंक्शन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और हमारे पास वीक
अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड H2CO3 बन जाता है। अब ये H2CO3 ये वीक है और अनस्टेबल है, ये फौरन हाइड्रोजन आयन पे और बाइकार्बोनेट आयन पे डिसएसोसिएट हुआ। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से आता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन इस हाइड्रोजन को लेकर हीमोग्लोबिनिक एसिड HHB बना और ये 4 ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हुए और ये 4 ऑक्सीजन सेल की तरफ आए। अब आप देखिए, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकला ब्लड की तरफ और आरबीसी से ऑक्सीजन वापस आता है। ये वो ऑक्सीजन है जो कि एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। अब हमारे साथ जो दूसरा कंपोनेंट रह गया है वो बाइकार्बोनेट। अब देखते हैं, ये आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स पाए जाते हैं, इनको बाइकार्बोनेट क्लोराइड चैनल प्रोटीन्स कहते हैं, ये रस्ते हैं। अब प्लाज्मा में 2 आयंस हैं, सोडियम और क्लोराइड, और आरबीसी के अंदर पोटासियम है। अब ये बाइकार्बोनेट आयन लीव करता है, ये लीव करता है आरबीसी से प्लाज्मा की तरफ निकल आया। अब जब प्लाज्मा की तरफ से निकल आया, तो आयनिक इक्विलिब्रियम इनसाइड द आरबीसी एंड आउटसाइड द प्लाज्मा ये डिस्टर्ब हुआ। लिहाजा यहाँ पे ली शाटलर प्रिंसिपल ओबे करता है। ली शाटलर प्रिंसिपल क्या है कि आयनिक इक्विलिब्रियम मस्ट बी मेंटेन। अब एक आयन बाइकार्बोनेट आरबीसी से प्लाज्मा पे निकल आया। अब प्लाज्मा से क्लोराइड आयन अंदर जाएगा आरबीसी पे, पोटासियम के साथ रिएक्ट करेगा और पोटासियम क्लोराइड बनेगा। लिहाजा आयनिक इक्विलिब्रियम दोबारा क्या हुआ, बैलेंस हुआ। अब ये बाइकार्बोनेट सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। अब ये बाइकार्बोनेट शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड अब रवान दवा है। अब यहाँ पे देखिए, अब आरबीसी के पास जो ऑक्सीजन था और वो तो सेल के पास चला गया। अब आरबीसी के पास नो ऑक्सीजन, अब यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये आरबीसी अब लंग की तरफ जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। अब यहाँ पे आप ये देखिए, ये मैंने पल्मोनरी स्टेट ड्रॉ किया है, पल्मोनरी स्टेट। अब ये लंग है और ये एल्वेलाई है। अब आपको पता है कि एल्वेलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। सो जब ये आरबीसी एल्वेलाई लंग तक पहुंचेगा, अब रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। याद रखिएगा, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज्ड, क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और व्हेन पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड इज डिक्रीज, रिवर्स रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। अब यहां पे रिवर्स रिएक्शन शुरू होने जा रहा है। कैसे, जब ये आरबीसी एल्वेलाई लंग तक पहुंचेगा तो सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट रिवर्स आकर बाइकार्बोनेट और सोडियम बनेगा, और आपका जो पोटासियम क्लोराइड है ये भी रिवर्स रिएक्शन पे क्लोराइड और पोटासियम पे कन्वर्ट करेगा। अब देखते हैं, ये बाइकार्बोनेट अब यहां से वापस अंदर की तरफ जा रहा है और ये वापस प्लाज्मा से अंदर आया आरबीसी के अंदर। अब दोबारा आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। सो ली शाटलर प्रिंसिपल ओबे होने के लिए अब पोटासियम क्लोराइड भी रिवर्स पे गया और ये क्लोराइड अब अंदर से वापस प्लाज्मा में बाहर निकल आया। सो आपका आयनिक इक्विलिब्रियम दोबारा मेंटेन हुआ। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा से बाइकार्बोनेट आरबीसी के अंदर गया और आरबीसी से क्लोराइड वापस प्लाज्मा में आया। अब यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अभी देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे आया है। अब आपका हीमोग्लोबिनिक एसिड ये वापस कन्वर्ट करा, किस चीज़ पे कन्वर्ट करेगा, ये वापस हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन पे कन्वर्ट करे, हाइड्रोजन पे। ये हाइड्रोजन यहाँ से वापस जाएगा, यहाँ पे आया, ये यहाँ पे दोबारा रिएक्शन हुआ, वापस क्या चीज़ बना, वीक अनस्टेबल कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड दोबारा टूट गया क्योंकि ये
डिसएसोसिएट हो जाता है, वीक है, अनस्टेबल है, वापस हमारे पास क्या चीज़ आरबीसी के अंदर बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब आप देखिए हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद है आरबीसी के अंदर वो कौन सा कंपोनेंट है केमिकल, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आरबीसी से जाएगा एल्वेलाई लंग के अंदर, और लंग्स में ये बाहर एक्सहेलेशन के जरिए व्हेन यू एक्सहेल एयर थ्रू नोज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक्सहेल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 ऑक्सीजन है, ये यहाँ से वापस आएंगे किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और वापस ऑक्सी हीमोग्लोबिन Hb4O2 जनरेट करेगा। अब लंग के अंदर आपका जो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ, और अब ये आरबीसी लंग से दोबारा बॉडी सेल्स की तरफ दोबारा जाएगा। लिहाजा 70% आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट है ब्लड पे वो थ्रू बाइकार्बोनेट आयनिक मैकेनिज्म है। इसको हम हैम्बर्गर फिनोमेना या क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट दैट इज एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये हमारे पास 23% है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन दैट मेक COHB कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन इज रिलीज टू सेल। अब यहाँ पे 2 रूल्स है। रूल नंबर 1, व्हेन पार्शियल प्रेशर इज इंक्रीज्ड इन टिश्यूज देन ब्लड, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। सो फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी अकर, और ये हमारे पास कौन सा स्टेज होगा, ये हमारे पास होगा सेलुलर लेवल। और व्हेन पार्शियल प्रेशर इज इंक्रीज इन ब्लड देन टिश्यू, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होगा, और ये हमारे पास पल्मोनरी लेवल होगा इनसाइड द लंग। तीसरा जो है वो है एज डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, ये ब्लड प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड 7% डिजॉल्व कंडीशन में सर्कुलेशन करता है। इसके बाद हमारे पास है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, अ केमिकल मॉलिक्यूल दैट स्टोर और ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस वही हमारे पास 2 हैं, एक है ऑक्सीजन और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है इसका ऑक्सीडाइज कलर, डीऑक्सीडाइज कलर और किन किन एनिमल्स में मौजूद है वो चार्ट है। हीमोग्लोबिन, इसका ऑक्सीडाइज कलर है ब्राइट रेड, तेज सुर्ख, और डीऑक्सीडाइज कलर है डल या डार्क रेड, और किन एनिमल में पाया जाता है, दैट वी कॉल वर्टिब्रेट्स। दूसरा जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन का ऑक्सीडाइज कलर ब्लू और डीऑक्सीडाइज कलर इसका कलरलेस, और एनिमल्स है दैट इज फाइलम मोलस्का। नंबर 3 रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोएराइथ्रीन। हीमोएराइथ्रीन का जो ऑक्सीडाइज कलर है दैट इज वायलेट टू पिंक, डीऑक्सीडाइज कलर है दैट इज कलरलेस एंड एनिमल मेरीन। नंबर 4 रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज क्लोरोक्लोरीन। सो क्लोरोक्लोरीन का ऑक्सीडाइज कलर है ग्रीन, डीऑक्सीडाइज कलर है कलरलेस, एंड द एनिमल्स रिप्रेजेंटिंग दैट आर फाइलम एनालिडा। मायोग्लोबिन इसका जो ऑक्सीडाइज कलर है दैट इज पिंकिश रेड, मीट कलर, जो गोश्त का कलर होता है, गोश्त का जो कलर होता है इट इज ड्यू टू मायोग्लोबिन। इसका डीऑक्सीडाइज कलर है ब्रिंजल डार्क रेड कलर, और कहाँ पाया जाता है, स्केलेटल मसल ऑफ वर्टिब्रेट्स। हमारे पास है हीमोग्लोबिन Hb। हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल अमीनो एसिड की जो तादाद है वो है 574। हीमोग्लोबिन इज मेटालोप्रोटीन, इसके अंदर आयरन या फेरस होता है, ये ग्लोबुलर शेप है
और क्वांटेनरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन। अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड्स हैं और बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड चेन्स हैं। सो टोटल चेन्स अगर आप काउंट कर लें तो ये बनता है 574। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द आरबीसी। इज दैट्स व्हाई वी कॉल इट रेड ब्लड सेल। दूसरा जो हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन इसको हम एमबी से डिनोट करते हैं और एब्रीविएशन इसका एमबी है और इसके अंदर 154 अमीनो एसिड सीक्वेंस है। ये ऑक्सीजन एंड आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है। कहाँ पाया जाता है? इन द स्केलेटल मसल्स। ये स्टोर करता है ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट करता है और ये यहाँ पे स्टोर करता है ऑक्सीजन और मीट कलर इज ड्यू टू दैट इज मायोग्लोबिन। अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस। What is sinus? Sinus is a cavity or a hole in a bone or organ. A human face has 4 pairs paranasal sinuses. 2 pairs we call major sinuses and 2 pairs we call minor sinuses. Major sinuses are frontal sinuses and maxillary sinuses. Minor sinuses are ethmoid sinuses and sphenoid sinuses. Acute sinusitis duration that is 2 to 8 weeks and chronic sinusitis duration that is more than 2 months. The causes of sinusitis may be bacteria, virus, dust, pollen, smoke, dryness of air, humidity of air, etc. The common symptoms of sinusitis are red itchy eyes, running or blocked nose, fever, pus-like nasal discharge, loss of smell we call anosmia. That we call anosmia, severe headache and facial pain. The treatment for sinusitis that use of antibiotics and sulfur drug. Sulfur drugs are those drugs that having sulfonamide group, that is antimicrobial agent. Otitis media, that is inflammation of the mid-ear. Eustachian tube block due to abnormal skin growth. What is the function of the eustachian tube? Its function is to equalize the air pressure between the outer and the inner ear and to drain out mucus. When pus is accumulated in the mid-ear, the tympanic membrane or eardrum is ruptured and pus is drained out through your auditory canal. Kids suffer more otitis media because of the horizontal position of the eustachian tube, while adults suffer less due to the vertical position of the eustachian tube. Doctor examine the inner ear by otoscope or oroscope. 80% otitis media self-recover in just 3 to 4 days, while 20% require medical attention. The common symptoms of otitis media: severe ear pain, deafness, tinnitus. Tinnitus कहते हैं कान बजना, ear fullness sensation, sleep disturbed, and fluid discharge from the ear. The treatment are use of antibiotics or myorhingotomy. Myorhingotomy, that is a surgical procedure, and tympanostomic tubes or grommets that are small, thinner diameter tubes get inserted through auditory canal to drain out the pus in mid-ear.
सो ये टिम्पैनोस्टोमिक ट्यूब्स या ग्रोमेट्स, ये बारीक सा क्या होता है, एक डायमीटर, बहुत थिन डायमीटर का एक ट्यूब सा होता है, और डॉक्टर उसको ऑडिटरी कैनाल के अंदर इंसर्ट करता है और पंक्चर करता है आपका एयर ड्रम। एयर ड्रम याद रखिएगा, एयर ड्रम में रीजनरेशन एबिलिटी होती है, इफ़ इट गेट रप्चर इट कैन बी रीजनरेटेड अगेन। लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में सबसे पहले निमोनिया। निमोनिया इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वेओलर वॉल and sac of one or both lungs either filled by fluid। 30 different causative agents हैं। Germs can enter the body through your nose, mouth or eye। Bacteria that causing pneumonia are Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Legionella, Pneumophila and Mycoplasma। The common symptoms, that is pleural effusion, fluid around the lungs, emphysema, that is pus in fluid, hyponatremia, low sodium ions in blood, abscesses of lung, that is localized pus। What is the general pneumonia symptoms? The general pneumonia symptoms that might be fever, chill, nausea, vomiting, violent productive cough, or even dry cough in case of viral pneumonia, muscle fatigue, rapid pulse rate, rapid breathing rate, severe chest pain, sweating, and we can say that cyanosis, that is bluish color to nail, lips and skin due to low oxygen concentration in blood। What will be the treatment of pneumonia? That is various sort of antibiotics, inhalers and bronchodilators। Tuberculosis, TB, that is very highly infectious chronic bacterial infection that spread people to people. The bacterium that responsible for tuberculosis, that is Mycobacterium tuberculosis. This bacterium lives inside the tubercle. Tubercle outgrowth in lung or organ or a bone we call tubercle. So this bacterium lives for decades. We call this as a dormancy period. The dormancy period may be from 15 to 20 years without harming the immune system. 85% tuberculosis affects the lungs, while 15% might affect the bone, joint, gut and lymph node. The infection ratio, that is 10%. Treatment, that is either 3 months, 6 months or 9 months therapy without any break. You have to use the medicine without any break. The medicine might be isoniazid tablets and rifampin tablets. The prevention measure against the tuberculosis may be Bacillus calmette-guerin vaccine after birth. Improve your personal hygiene, improve your washroom hygiene, proper ventilation and light at your home. Always use boiled milk. Avoid crowd. Disorders of lungs. Emphysema, gradual damage of alveolar wall due to exposure of chemicals, irritant, smoke or pollution. The alveolar wall lost elasticity and become hardened. The alveoli permanently enlarged. Old air trapped inside. So as a result, shortness of breath, general fatigue in the body, coughing and cyanosis.
Cyanosis, the bluish color of skin, lips and nail due to low oxygen in blood. The treatment of emphysema, that is the use of various antibiotics. Lung cancer, most common cancer in world due to cigarette smoking. Risk of cancer may be increased by pollution, radiation and asbestos. Asbestos is anti-fire packing material that is made of 6 minerals, chiefly silicates. Asbestosis, lung cancer due to inhaling asbestos smoke. Metastasis, the spreading of cancer from infected area to healthy area. The treatment of cancer, radiation, that is NMR, nuclear magnetic radiation. Chemotherapy, the side effect of chemotherapy is alopecia, that is removal of hairs from whole body, and surgery. The symptoms of lung cancer may be chest pain, blood in coughing, short breathness, frequent pneumonia and bronchitis, swelling of neck and face, loss of appetite, loss of weight, etc.